Hello everyone, myself Dhatria and today we are going to learn class 9 SS chapter number 1 Rise of British Rule in India. Today we are going to cover these points in this chapter. First one, introduction, then discovery of sea route to India, then third one, arrival of Europeans to India, that is arrival of the British and establishment of trade centers. After that, Battle of Plassey, then Battle of Buxar, then after that expansion of the company rule, then seventh one, economic impact of the company, then social impact of the company rule, then after that we will discuss the conclusion of the chapter, then discussion of exercise questions and answers. Now let's begin with the introduction of the chapter. Since the ancient times, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. Means, since the ancient times, due to India's economic, cultural and religious inheritance, it has an incomparable position in the whole world. There was a lot of demand for the Indian spices, मसलिन मतलब मलमल का कपड़ा, silk cloth, indigo मतलब नील and other goods in the European countries. European countries में इंडिया की spices, मसलिन, silk cloth, indigo और other goods की बहुत डिमांड थी. Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of this route was Istanbul, that is Constantinople in Turkey. मीन्स इंडिया और यूरोप के बीच में बिजनेस कैसे होता था? थ्रू लैंड रूट एंड थ्रू सी रूट, और ये रूट्स के बीच में इस्तांबुल था विच इज लोकेटेड इन टर्की. The trade center between Europe and India was closed down because Istanbul was conquered by the Turkish Muslims in year 1453. इन ईयर 1453 में टर्किश मुस्लिम ने इस्तांबुल को जीत लिया था, वहाँ पे कनकर कर लिया था. सो उन्होंने यूरोप और इंडिया के बीच में जो ट्रेड सेंटर था उसे क्लोज कर दिया. Since they could not do with this without the spices, it became necessary for the Europeans to discover a new sea route to reach India. Europeans को spices के बिना नहीं चल सकता था, so ये उनके लिए एक necessity हो गई कि इंडिया तक reach करने के लिए एक new sea route बनाना था उन्हें. Now, discovery of sea route to India. With the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, Bartholomew Diaz discovered the Cape of Good Hope. पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी से इंस्पिरेशन, इंकरेजमेंट और इकोनॉमिक हेल्प लेके बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप डिस्कवर किया. नेक्स्ट, विद द इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस began his adventure of finding a new sea route to India, which came to a stop at an island which is presently known as West Indies, situated in the Atlantic Ocean. Means स्पेन के किंग से इकोनॉमिक हेल्प लेके क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्टार्ट किया न्यू सी रूट फाइंड करने का. सो विच केम टू स्टॉप एट एन आइलैंड, और वो आइलैंड को क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज, विच इज सिचुएटेड इन द अटलांटिक ओशन. आफ्टर दैट कोलंबस हैड एक्चुअली डिस्कवर्ड अ लैंड which he was believing that he had discovered a new sea route to India. Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. मीन्स कोलंबस ने बाद में एक सिर्फ लैंड ही डिस्कवर किया था, पर उसको ऐसा लगता था कि उसने इंडिया तक रीच करने के लिए एक न्यू सी रूट डिस्कवर की है. सिंस दिस क्लैरिफिकेशन वॉज मेड बाय अमेरिगो वेस्पुक्की, दिस न्यू लैंड उसके नाम से ही जाना गया, दैट इज अमेरिका. Now, the Portuguese sailor Vasco da Gama discovered a new sea route to India in year 1498. King Zamorin welcomed him when he reached Calicut and allowed to carry out business there. Thus, this is considered as an important event in the world as this opened doors of India for other Europeans. Means King Zamorin ने उसे अलाउंस दे दी, जब वो कैलिकट पहुंचे थे वास्को दा गामा, तो उन्हें अलाउंस दे दी कि वो वहाँ पे अपना बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं. So this time is considered as very important time in the world because this opened the doors of India for other Europeans. Now our next topic is arrival of Europeans to India. Now next we will learn about how the British arrived in India and how they established their trade centers in India. Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of sea route to India. Within 100 years of time, they took control of several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc.
देन पोर्टुगीज से इंस्पायर्ड होकर डच जो हॉलैंड में से थे एंड डेनिश फ्रॉम जो डेनमार्क से थे अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड. Then the English traders established the East India Company for undertaking trade with India and other eastern countries. So in year 1600 AD, Queen Elizabeth of England gave permission to East India Company for this. Then first ship under the leadership of Captain William Hawking arrived in Surat. But due to the opposition from Portuguese, they were not allowed to establish their trade there. मतलब पोर्टुगीज का वहाँ पे तब इंडिया में कंट्रोल था, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपोज किया और उन्हें वहाँ पे ट्रेड कैरी आउट करने की परमिशन नहीं दी. बट फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट परमिशन फ्रॉम मुगल एम्पेरर जहांगीर and so they established their first trade center means Koti in Surat in year 1613 AD. They established their trade centers in Surat, Bharuch and Ahmedabad. But due to strong presence of Marathas in this region means Surat, Bharuch और Ahmedabad में Marathas का बहुत strong power था. So the company sensed danger to its existence and so they moved towards south and east direction. जहाँ पे उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर सेटअप किए like मछलीपट्टनम which is located in Andhra Pradesh, St. George which is in Chennai and Fort William which is in Kolkata. They made Mumbai as their headquarters in year 1687 AD. In year 1668 AD, French East India Company arrived in India for trade. They set up their trade centers in Mahe, Karaikal, Pondicherry, Chandranagar, Machilipatnam, etc. In 18th century, English and French were busy in establishing their rule in the whole world. Between years 1746 and 1763, there were 3 Carnatic wars between French and East India Company, in which French East India Company failed, and so by defeating French, British expand their rule in India. So at the end of the battle, Portuguese left with Diu, Daman, Goa. मतलब वॉर के बाद पोर्टुगीज को दीव, दमन और गोवा छोड़ना पड़ा, जबकि फ्रेंच के पास उसके ट्रेड सेंटर्स थे जैसे कि चंद्रनगर, माहे, करैक्कल एंड पौंडीचेरी, जबकि डच को हमेशा के लिए इंडिया को छोड़कर जाना पड़ा. Now our next topic is Battle of Plassey. To begin with the Battle of Plassey, I want to tell you some main points of this battle. Like on date 23rd June 1757, this battle was fought. The location was, this battle was fought in Plassey, which is pronounced as Palashi, which is in Bengal. The result of the battle is that it was a decisive, means decided victory for British East India Company. As a point of territorial changes, Bengal was annexed by British East India Company. Now let's learn about it in detail. The Battle of Plassey took place between Siraj-ud-Daulah, who was the Nawab of Bengal, and the East India Company. The East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on the pretext of security reasons without taking the permission from the Nawab. नवाब से बिना परमिशन लिए कोलकाता के ट्रेड सेंटर में कंपनी ने फोर्ट्रेस बिल्ड करवा लिया था on the pretext of security reasons. This fortress was destroyed by the Nawab. Therefore, Robert Clive reached Bengal to protect Kolkata trade center. The British realized that it was not easy to defeat the Nawab. Therefore, Robert Clive resorted to treachery and hatched a plan to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Zafar and Seth Amichan were coaxed to work against the Nawab. ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि नवाब को हराना इतना इजी नहीं है, सो रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब को चीट करने का सोचा और उसके खिलाफ एक प्लान बनाया. एंड व्हाट वाज द प्लान? द प्लान वाज दैट द नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जफर एंड सेठ अमीचंद को कंपनी ने अपनी तरफ ले लिया था टू वर्क अगेंस्ट द नवाब. द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड द वॉर एट प्लासी ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट द नवाब वाज अननेसेसरीली हरासिंग द पीपल. ब्रिटिश ने प्लासी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन द कौन से रीजंस पे बेस होके? दैट द नवाब लोगों को फालतू में हैरान कर रहा है. सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी. एज अ रिजल्ट मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया. The company got a free hold over 24 Parganas. Thus, the Battle of Plassey in year 1757 laid the foundation of the company's rule in India. Now our next topic is Battle of Buxar.
To begin with the Battle of Buxar, let's learn its some main points. Like on date 22nd October 1764, this battle was fought. The location was, this battle was fought near Buxar. The result of the battle is that the victory of the English East India Company. After that, the company got the Diwani rights for the provinces of Bengal, Bihar and Odisha. Now let's learn about it in detail. The Britishers made Mir Zafar the Nawab of Bengal and under different pretexts tried to extract plenty of wealth from him. ब्रिटिशर्स ने मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया था और अलग अलग रीजंस पे कंपनी मीर जफर से plenty of wealth extract करती थी. Due to their greed to gain more powers, the East India Company managed to dethrone Mir Zafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. इस कंपनी ने मीर जफर को नवाब ऑफ बंगाल की पोजीशन से हटा दिया था और मीर कसीम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया. देन द ईस्ट इंडिया कंपनी रिमूव मीर कसीम and appointed Mir Zafar again the Nawab of Bengal because the company felt certain. कंपनी को ऐसा लगा कि जो मीर कसीम है वो घातक है, मतलब वो चीट कर रहा है कंपनी को, इसलिए उन्होंने मीर कसीम को रिमूव करके मीर जफर को फिर से नवाब ऑफ बंगाल बनाया. देन एज मीर कसीम वॉज मोर एम्बिशियस देन मीर जफर, तो उसने नवाब ऑफ अवध के पास जाके शेल्टर लिया. During this time, the Mughal Emperor Shah Alam had come to Awadh. ये टाइम पे नवाब ऑफ अवध भी नवाब ऑफ अवध में अवध में मुगल एम्पायर शाह आलम भी आए हुए थे. So all three of them decided to join and fight against the company unitedly. So तीनों ने डिसाइड, कौन थी? मीर कसीम, मुगल एम्पायर शाह आलम एंड नवाब ऑफ अवध. ये तीनों ने डिसाइड किया कि ये तीनों ज्वाइन हो जाएंगे और कंपनी से फाइट करेंगे, कंपनी के खिलाफ फाइट करेंगे. एंड सो डिक्लेयर्ड अ वॉर. The picture you see describes the Battle of Plassey. Okay. At Buxar, the East India Company fought against the United Army on date 22nd October 1764, in which the United Army lost. Means Buxar में East India Company ने United Army के साथ war किया on date 22nd October year 1764, जिसमें United Army हार गई. Next, as a result, the company got the Diwani rights. Means what was the Diwani rights? Right to collect revenue for the provinces of Bengal, Bihar and Odisha. Means कंपनी ने यूनाइटेड आर्मी के साथ वॉर किया और उसमें यूनाइटेड आर्मी हार गई. उसके वजह से कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए फॉर द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. Now as I know that there is a difficulty to learn history, so today we will learn how to learn Battle of Plassey and Battle of Buxar with help of three differences. So first difference is Battle of Plassey was fought in year 1757 while the Battle of Buxar was fought in year 1764. So there is a difference between years. Next difference is Battle of Plassey सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, while Battle of Buxar was fought between Mir Qasim and East India Company. Next difference is Battle of Plassey वेस्ट बंगाल में fought हुआ था and Battle of Buxar was fought in Bihar. So there is also a difference between places. Now our next topic is expansion of the company rule. The English government passed the Regulating Act in year 1773. Regulating Act में क्या था? मीन्स जो बंगाल का गवर्नर होगा वही पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का भी गवर्नर जनरल होगा. Warren Hastings became the first Governor General of India. During his tenure, the first Maratha War and the second Mysore War with Hyder Ali of Mysore was waged. Means उसके ruling time पे उसने एक मराठा war और second Mysore War हैदर अली के साथ लड़ा था. The problems for the East India Company increased because it had to face both the powers simultaneously. After Warren Hastings, Cornwallis became the next Governor General. The Governor General Cornwallis defeated Tipu Sultan in the Third Mysore War and expanded the territory under the control of the East India Company. Means Governor General Cornwallis ने टीपू सुल्तान को हरा दिया in Third Mysore War and expanded the territory. Means East India Company की territory और expand की और उसके control भी और expand किया. After Cornwallis, Sir John Shore became the next Governor General.
due to some rigid policies. Rigid means hard policies adopted by him. Who has adopted? Sir John Shore. The East India Company's fame declined, means East India Company की popularity decline हो गई and Marathas became stronger. So Governor General Wellesley, who became after John Shore, means John Shore के बाद में Governor General Wellesley हुआ, introduced the subsidiary alliance system and restored the fame of the company and expanded its territory in India. Means Governor General Wellesley ने subsidiary alliance system को introduce किया और उसी की वजह से कंपनी की पॉपुलैरिटी फिर से रिस्टोर हो गई और इंडिया में उसकी टेरिटरी और एक्सपांड हुई. नाउ लेट्स लुक एट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम. फर्स्ट, the army trained by the East India Company government will provide it to the state that accepts the system. Means जो subsidiary alliance system को accept करेगा, जो state ये system को accept करेगा, वही state को सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट की ट्रेन करी हुई आर्मी प्रोवाइड की जाएगी. नेक्स्ट, इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम will provide for the army or give away provinces with equivalent income to the British. मीन्स जो स्टेट सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है उसे रिटर्न में कंपनी को एक अपनी आर्मी प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो जो उसका राज है, मीन्स जहाँ पे वो उसके जो प्रोविंसेस है वो देनी पड़ेगी और उसके साथ इक्विवेलेंट इनकम भी प्रोवाइड करनी होगी ब्रिटिश को. नेक्स्ट, without the permission of the company, the state will not wage war or sign treaty with other states. Treaty means समझौता. There will be one English representative in the state assembly. Means state assembly में एक English representative compulsory होगा. Fifth one is other foreigners not to be employed in the state. और state में कोई भी foreigners को employ नहीं किया जाएगा. The states who accepted the subsidiary system, the list of the subsidiary means जो भी states ने subsidiary alliance system को accept किया था उसकी लिस्ट दी गई है. निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिसिंधिया, भोसले, होलकर, ये सब states ने subsidiary alliance system को accept किया था. After Wellesley, Hastings came to India as Governor General. He defeated the Gurkhas, the Pinjras and the Marathas and established the supremacy of the company. उसने गुरखास, पिंजरास और मराठास को हरा दिया और कंपनी की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की. विलियम बेंटिंग, known as the liberal governor general. Liberal means a person of broad views. ऐसा इंसान जो बहुत बड़े विचार रखता, तो वो उसे कहा जाता था लिबरल गवर्नर जनरल, who played an important role in making the company's rule stable. In year 1848, Dalhousie came to India as the Governor General. He adopted a policy of annexation for the expansion of the company's rule over India. इंडिया के ऊपर कंपनी का रूल और एक्सपांड करने के लिए उसने पॉलिसी ऑफ annexation को अडॉप्ट किया. Now, Governor General annexed the following states with the policy of annexation. Annexation by defeating the rulers of Punjab, Pegu, which is located in Lower Burma. Annexation means हड़प लेना. उसने पंजाब और पेगू के रूलर्स को हरा के वहाँ के वो स्टेट्स हड़प लिए थे. नेक्स्ट, एनेक्स सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर which is located in MP, झांसी, भगत and नागपुर as the king of these states had died without hire. Hire means ऐसा मतलब कोई राजा मर गया हो तो उसके बाद में कोई भी उसकी राजगद्दी संभालने वाला नहीं, मीन्स हायर मीन्स सक्सेसर सिंपली. सो ऐसे स्टेट्स के किंग जो डाई हो गए थे विदाउट हायर, सो ये उनके स्टेट्स हड़प लिए गए थे. एनेक्स अवध ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट. मीन्स अवध को एनेक्स हड़प लिया गया ऑन द रीजंस ऑफ मिसमैनेजमेंट. Now fourth one, annexed Nizam's province on the pretext of debt collection. Debt means कर्ज का collection. Fifth one, annexed Karnataka and Tanjore to end the namesake rule. Namesake means one that has the same name as another. Okay, so namesake rule को हमेशा के लिए end करने के लिए कर्नाटक और टांजोर को भी annex कर लिया गया.
He introduced many reforms and was known as reformist. उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स परफॉर्म किए, so इसलिए उसको रिफॉर्मिस्ट भी कहा जाता है. During his tenure, the first railway line in India between Mumbai and Thane was laid in year 1853. In year 1853 में first railway line India में establish हुई between Mumbai and Thane. Wireless system connecting India and England was set up. Establishment of public works department का establishment हुआ और वायर सिस्टम जो इंडिया और इंग्लैंड को कनेक्ट करता हो वो सेटअप किया गया. नेक्स्ट, English education was introduced. Laws were passed to ban child marriage and give permission to widow remarriage. Within 100 years from the Battle of Plassey in year 1757, the British rule and the empire both expanded. Means Battle of Plassey in year 1757 में fought हुआ था. So उसके 100 साल बाद ही means 100 साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल और उसका एम्पायर दोनों ही एक्सपांड हो गया. But in the process, they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in year 1857. और इसी की वजह से कुछ इंडियन स्टेट्स उससे डिससेटिस्फेक्शन फेस करना पड़ा, कंपनी को डिससेटिस्फेक्शन फेस करना पड़ा और इसी की वजह से फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन ईयर 1857 में का वॉर हुआ. This picture describes the expansion of the company's rule in India. Now the next topic is economic impact of the company. कंपनी का economic impact क्या हुआ वो देख लेते एक बार. In 100 years of company's rule, India became a country that produced raw material for England and a prospering market for goods produced in factories. Means कंपनी के रूल के 100 साल में ही इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई जो सिर्फ इंग्लैंड के लिए एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती थी एंड ए प्रॉस्पेरिटी मार्केट फॉर गुड प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट एंड मसलिन बिटवीन ईयर 1708 and 1756. However, the glitter of economic prosperity faded after the introduction of dual power policy. Means dual power policy के introduce होने के बाद economic prosperity पूरी decline होने लग गई. The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasant a debtor. Means कर्जदार बहुत बना दिया इंडियन peasant को क्योंकि कंपनी बहुत गलत तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन करती थी. Then the British government imposed unfair taxes on the Indian cloth industries. Means British government अनफेयर टैक्सेस इम्पोज करने लग गई इंडियन क्लोथ इंडस्ट्रीज के ऊपर. दे अडॉप्टेड वेरियस डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस टू रूइन द प्रॉस्पेरस इंडियन क्लोथ इंडस्ट्रीज विच कोलैप्स्ड कंप्लीटली. मतलब कंपनी पूरी बहुत गलत प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती थी क्योंकि उन्हें इंडियन क्लोथ इंडस्ट्रीज को पूरे डिस्ट्रॉय करना था जो कि पूरी बंद हो गई थी. द इंडियन आर्टिशंस बिकेम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड. इसके वजह से इंडियन आर्टिशन बहुत गरीब हो गए और बिना काम के हो गए. द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स द वीवर्स इन बंगाल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इन अ शॉर्ट पीरियड. मीन्स कंपनी के ट्रेडर्स ने बंगाल के वीवर्स को फोर्स किया, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि उन्हें एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ की प्रोवाइड करना होगा कंपनी को, वो भी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज इफ अ वीवर रिफ्यूज्ड he would be punished by being jailed. अगर वीवर ने रिफ्यूज किया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा. The Indian villages were self-reliant. Self-reliant मतलब वो खुद self-dependent थे and prosperous before the arrival of the company. कंपनी के अराइवल होने से पहले सारे इंडियन विलेजेस खुद डिपेंडेंट थे और बहुत प्रॉस्परस थे. मीन्स हमारी इंडिया बहुत प्रॉस्परस थी बट दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर अंडर द कंपनीज रूल. In this way, the company's rule had adverse impact on agriculture, cotton industries, trade and commerce. Commerce means financial condition in India. Financial condition, trade, cotton industries और agriculture पे ये कंपनी के रूल की वजह से पूरा adverse impact means पूरा गलत impact हुआ. Now, social impact of the company rule. ऊपर हमने देख लिया economic impact क्या पड़ा कंपनी का. Then अब देख लेते कंपनी के रूल का social impact क्या हुआ. The freedom of speech and thought developed among the people during the British rule due to the development of newspapers.
With the help of Britishers, the social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Durga Ram Mehta, Behramji Malbari and other stalwarts मतलब strong person, ये सारे stalwarts ने, ये सारे social reformers ने ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके ऐसे लॉज बनाए जो सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब दूध पीती और चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करवाने के लिए लॉज बनाए. As the administrative framework of India was anglicized, there was demand for people with knowledge of English. Thus, English education began to be imparted in India due to endeavor of Lord Macaulay. Means हमारे इंडिया का पूरा जो फ्रेमवर्क था वो पूरा ऐसा हो गया था कि टू मेक समबडी इन इंग्लिश कैरेक्टर. एंग्लिसाइज का मतलब क्या होता है? टू मेक समबडी इन इंग्लिश कैरेक्टर. सो ये पूरा हमारा एंग्लिसाइज्ड हो गया था. सो इसलिए ऐसे लोगों की डिमांड थी जो इंग्लिश जिनमें इंग्लिश का नॉलेज हो. दस इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में पूरी इम्पार्ट मतलब होने लगी इंग्लिश एजुकेशन ड्यू टू द एंडेवर ऑफ लॉर्ड मैकोले. एंडेवर मतलब लॉर्ड मैकोले की कोशिश की वजह से इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस होने लग गई. नेक्स्ट, यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स वुड. चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशन की वजह से मुंबई, मद्रास और कोलकाता में यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई. A whole class of people with knowledge of English developed because of English education. This group demanded social reforms and gave momentum to the process of reforms. Means ऐसे लोग थे जो इंग्लिश के नॉलेज से डेवलप हुए थे बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. और यही ग्रुप ने सोशल रिफॉर्म्स की डिमांड की और इसके वजह से रिफॉर्म्स में तेजी आई, फास्ट हो गए. नाउ कंक्लूजन. ये चैप्टर का कंक्लूजन क्या था वो देख लेते हैं. Thus, the East India Company came to India being allured. Allured means attracted by the prosperity and trade opportunity. इंडिया की प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड अपॉर्चुनिटी से अट्रैक्ट होके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी. द कंपनी रूल इन इंडिया प्रोड्यूस्ड सर्टेन गुड एंड बैड रिजल्ट्स इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स. कंपनी के रूल की वजह से इंडिया में कुछ गुड और कुछ बैड रिजल्ट्स आए. कौन से फील्ड्स में? इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स. The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reforms they made in the administration for their own interest indirectly proved to be beneficial for India. कंपनी क्या चाहती थी? वो ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करती थी जिससे इंग्लैंड ज़्यादा प्रॉस्परस हो. बट वो ये सब खुद के इंटरेस्ट के लिए करती थी, बट इट indirectly proved to be beneficial for India. So now we have completed our whole chapter. So let's come to exercise. Now let's learn the exercise of the chapter. Question number 1. Answer the following questions briefly. Exercise के जो भी आंसर्स है वो सब हम चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें सिर्फ हम आंसर्स को पॉइंट वाइज रिवाइज करेंगे. फर्स्ट वन, यूरोपियंस फेल्ट द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. मीन्स यूरोपियंस को ऐसा लगा कि उन्हें डिस्कवर करनी चाहिए एक न्यू सी रूट जो इंडिया तक पहुंच सके, तो इसे एक्सप्लेन करना आंसर में. आंसर, इंडिया हैज एंजॉयड एन इनकम्पेरेबल पोजीशन इन द होल वर्ल्ड फॉर ट्रेड. देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लॉथ, इंडिगो एंड अदर गुड्स इन द यूरोपियन कंट्रीज. Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of this route was Istanbul, Constantinople in Turkey. After the conquest of the Constantinople by the Turkish Muslims in 1453, the sea route passing through the Constantinople was closed for the Europeans. Since they could not do without the spices, it became necessary for the Europeans to discover a new sea route to reach India. Now our next question is, what reforms did Dalhousie bring about? Dalhousie ने कौन से बदलाव किए? So answer, the following reforms were introduced by Governor General Dalhousie during his tenure. The first railway line in India between Mumbai and Thane was laid in year 1853. Wireless system between India and England was set up. Establishment of Public Works Department. English education was introduced. Laws were passed to ban child marriage and give permission to widow remarriage. Thus,
we can conclude that Dalhousie was a reformist governor general. Now, question number 2. Answer the following questions in detail. First one, give brief information about the Battle of Plassey. Battle of Plassey के बारे में डिस्क्राइब करना है. Answer: The Battle of Plassey took place between Sirajud-Dowla, who was the Nawab of Bengal, and the East India Company. Means Battle of Plassey East India Company और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था. Next, the East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on the pretext of security reasons without taking the permission from the Nawab. But Nawab Sirajud-Dowla destroyed the fortress. Therefore, Robert Clive reached Bengal to protect Kolkata trade center. The British realized that it was not easy to defeat the Nawab. So, Robert Clive resorted to treachery and hatched a plan to defeat the Nawab, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Zafar and Seth Amichan were coaxed to work against the Nawab. Next, the British declared the war at Plassey on the pretext that the Nawab was unnecessarily harassing the people. Next one, Sirajud-Dowla was defeated in the Battle of Plassey. Then, as a result, Mir Zafar was made the Nawab of Bengal. The company got a freehold over 24 parganas. Thus, the Battle of Plassey in year 1757 laid the foundation of the company's rule in India. Now, next question is explain the economic impact of the company rule in India. Means India में जब कंपनी का रूल था तो उसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट था. सो वो एक्सप्लेन करना है आंसर में. The economic impact of the company's rule. India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produced raw material for England and a prospering market for goods produced in factories. Bengal exported cotton cloth, raw silk, sugar, jute and muslin between year 1708 and 1756. However, the glitter of economic prosperity faded after the introduction of dual power policy. Dual power policy के बाद में economic prosperity पूरी decline होती जा रही थी. Now, the unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasant a debtor. The British government imposed unfair taxes on the Indian cloth industries. They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian cloth industries, which collapsed completely. The Indian artisans became poor and unemployed.
Thus, the company traders forced the weavers in Bengal to sign a contract for providing a definite quantity of cloth in a short period of time. If a weaver refused, he would be punished by being jailed, and the Indian villages were set resilient and prosperous before the arrival of the company, but they became dependent and poor under the company's rule. In this way, the company's rule had adverse impact on agriculture, cotton industries, trade and commerce in India. Now next question is, explain the social impact of the company rule in India. मीन्स इंडिया में जब कंपनी का रूल था तो उसका क्या सोशल इम्पैक्ट हुआ, तो वो उसे एक्सप्लेन करना है. द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल. द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमंग द पीपल due to the development of newspapers. Certain wrong social customs, rites and rituals like sati system, female infanticide, child marriage prevailed in India during the 18th and 19th century. Raja Ram Mohan Roy, Durga Ram Mehta, Bairamji Malwari and other stalwarts were instrumental in getting laws passed in preventing these practices with the help of Britishers. As the administrative framework of India was anglicized, there was demand for people with knowledge of English. Due to the endeavour of Lord Macaulay, English education began to be imparted in India. As recommended by Charles Wood, universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata. English education led to the emergence of a new class of educated Indians. With the passage of time, this group made demands for social reforms and gave momentum to the process of reforms. These were the notable aspects of the impact of the company rule on the Indian society. Now the next question is MCQs. First one, who discovered the sea route to India? India के लिए new sea route किसने discover की? So our answer will be C, Vasco da Gama. Second one, during whose tenure was the Public Works Department established in India? Means Public Works Department India में किसके rule के time establish किया गया था? So our answer will be D, Dalhousie. Third one, which of the following statement is false? A, the Battle of Plassey was fought in 1757. This statement is true. B1, the company got a freehold over 24 parganas of Bengal due to the Battle of Plassey. This statement is also true. C, the company got the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa due to the Battle of Plassey. This statement is false because the company got the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa but due to the Battle of Buxar. So this statement is false. Now let's look at D. Siraj-ud-Daulah was the Nawab of Bengal during the Battle of Plassey. So this statement is also true. So the statement which is false is C1. The company got the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa due to the Battle of Plassey. Next one, who became the first Governor General of India? So our answer will be A, Warren Hastings. Fifth one, with whom did the British fight the third Mysore War? Third Mysore War British ने किसके साथ fight किया था? So our answer will be A, Tipu Sultan. Thanks for listening and watching.